Tuesday afternoon. Well, my name is Nirupama, an employment to entrepreneur counselor, here with you on this Thursday with a very special guest. That there she is, Niyatii. Hi, how are you? I'm very well, Nirupama. Thank you so much for bringing me here and giving me this platform to speak of my journey and my experiences. Thank you so much. Awesome. Actually, the pleasure is all ours because somewhere or the other, your journey has been so powerful that anybody who goes through that is going to enrich herself, himself. So we had to have you here. Every time I hear your journey, I am super excited and I am pepped up. So I really thought the audience needs to hear it and, they need to be a part of that. Thank So, you. नियति हम जब भी स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन राउंड करते हैं whenever we are beginning. So मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देती हूँ, then we'll pass the baton to you. थोड़ा गेम, थोड़ा मजा आएगा तो ऑडियंस को भी मजा आएगा. So hi everyone, all those who are listening to me. My name is Nirupama, as I mentioned, an employment to entrepreneur counselor with over half a decade of experience with the Government of India as a corp and another half a decade of experience as an entrepreneur, helping working women launch their entrepreneurial journey. So in this series, we are wanting to learn from all the experts so that we can learn from their life. And that is the topic of our live today, creating a business around your life experience. So now, Niyatii, we pass the baton to you. And I want to know from you that how did Niyatii become the person that she is today? I think it's a very general answer to this question. All of us become who we are because of our experiences, because of the choices we make. So Right. today, now that if I have to introduce myself, there are so many different roles I have experienced, I have been on, I have adopted in my lifetime that sometimes I have to wonder, like, which role am I playing when? Right. Having a journey of almost 12 years as a sexuality educator, as an intimacy coach, also came from a space where I was in a role of a mother. So, it all started from one role, ended up to another one. So I think it's all about the choices I made along the way. Right. Put in a lot of hard. Yeah. I knew I knew to myself. I knew exactly what I knew exactly how I wanted to get them solved. Who did I want to go to? Yes. So while Niyatii is answering the question, I would want to know. Yes, there was a little bit of a technical glitch, Niyatii, that way. Yes. Niyatii, could you check the internet at your end? Right. So while Niyatii is trying to fix the internet at her end, what we are going to do essentially, we are going to really know from you that what are your questions for today, because a lot of times whenever we have an expert and whenever we are wanting to learn from the life experience of an expert, आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ questions तो होंगे that मेरी भी life में बहुत कुछ हुआ है and मैं अपनी लाइफ में उस चीज को कैसे एक बिजनेस आइडिया की तरह यूज कर सकती हूँ. So today's show is all about that, and that's exactly what we are going to be talking about. So while Niyatii is joining, we are going to have some of you really put in your questions so that we can take it live with Niyatii and we can hear from you. Start putting in the questions and also let us know that which place are you logging in from. Please let us know in the chat section. Yes, I am waiting for your questions. Please put your questions in the chat. So ladies and gentlemen, whenever we are starting anything in life, there are a lot of things that come our way. And, being a part of this live
while we were wanting to, just give me a moment. I think Niyati is wanting to coordinate with us. Let me just bring Niyati here. Yes. So she will be joining in shortly. Let me do just one thing. Let me uh, bring Niyati right here. You will have to give us some time. Life में बहुत सारी चीजें होती है. So we need to go along with the way the things are, and just keep marching ahead, keep moving ahead in that direction, so that we are able to really uh, you know actually somebody told me recently, it's not about you know looking at what life is giving you, but it is all about how do you make mojito out of the lemons that life is throwing upon you. So we are not making lemonades, but we are making mojito out of the amazing lemons that life is throwing us, and the technical part is throwing at us. So Niyati, we were wanting to know your story, and I think इंतजार अब और भी ज़्यादा है, because लोग आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उत्सुक है कि oh my God, what is the story behind this amazing lady? So Niyati, हम शुरुआत से स्टार्ट Absolutely. करते हैं. प्लीज बताइए. Yeah, so absolutely. Generally, as you had asked me to introduce myself and how I am, who I am today, it was all Right. about the choices I made. It was all about being aware of what my needs were, what my family's needs were, and then taking it one after the other and making sure that as much as I was working for myself, I was also Right. available for others. So that's Right. who I kind of became today. Lovely, lovely. So, you spoke about choices, and we would really want to know in detail what were those choices. Like, if we talk about sexuality educator in India, I mean, that's still a field that is tabooed in a huge way. And, before you told us that your journey came from a mother, all of us had different things. Okay, how did she become a sexuality educator? Because it's about the meaning that we give to certain terms in our life. So we would want to know a little bit more in detail, what exactly happened. कुछ कहानियां सुनाइए अपनी लाइफ से. So it all began. So when I was pregnant with my first child, मैं जब पहली बार I have two children, तो जब मेरी Right, पहली pregnancy थी तभी एक ऐसा ख्याल आया था और एक ऐसी इच्छा थी that I want to be there for my children. मैं right, ऐसी माँ बनना चाह रही हूँ जहाँ मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझसे बातें करें, मुझसे खुल के बात करें. I am there to support them. They see a home as a safe space and us right, as that source that they can come to. जो भी right, पूछना हो पूछे, बिंदास पूछे. तो एक इच्छा तो थी ही कि वैसा एक पेरेंट बनना है. तो right, पेरेंटिंग कोर्सेज करती थी, बुक्स पढ़ती थी, और पेरेंट्स से बात करती थी, टीचर्स से बात करती थी. आई वाज वेरी अवेयर. लेकिन right, कभी ये ऐसा कोई टॉपिक ध्यान में नहीं आया, या तो किसी ने कोई वर्कशॉप नहीं लिया था, या किसी ने बात नहीं छेड़ी थी पेरेंट्स में भी, टीचर्स में भी, कि सेक्स एजुकेशन भी कुछ होता है. right, और जब एक my that first child was 6 years old, and one doctor came to the school of my child's school and spoke about what sex education is, and right. he put in a lot of emphasis on child sexual abuse. तो जब Mm-hmm. ये टॉपिक वो कवर कर रहे थे, तभी एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि I was also touched as a young girl, multiple Right, times as a woman. ऐसा होता है, and we know this for a fact that a lot of us have been abused, man or woman. तो right, मेरे मन में एक ध्यान आया कि इतना कुछ होने के बावजूद मैंने कभी right. एक भी नहीं सोचा कि मुझे अपने बच्चों को भी इससे प्रिवेंट प्रोटेक्ट कैसे कर सकूं. मैं क्या Yes. सिखाऊं उनको ताकि वो सेफ रह सके. ये कभी ध्यान में नहीं आया. But this Right. lecture kind of took me, on that journey, that Mm-hmm. I want to be that parent where the child should be able to come and talk to me. I should Right, know about this topic also. How right. can I only support career wise and
Yes. So Niyati की journey ऐसी रही, when a doctor came to, really her child's school, that was the time there were certain topics that were spoken to Niyati's son about sexual education. And that's where Niyati thought that, जब उनको बाहर वालों से पता लग रहा है, why as a mother she couldn't talk about that. So Niyati, Absolutely. आगे की कहानी आपसे जानना चाहेंगे. Yes. I just want to say a big sorry for the network connection, but I think at the end of the we're going to get the story right. Yes. So when I heard about that entire 1.5 hour lecture, I was like, ये तो बाबा जानना है, because I cannot leave this topic out of my child's life. And Right. that's when I started studying about the topic. I went and I did my first course, which gave me a certificate. Or in India, there is no formal education on sex education. You Yes. can be whatever in your field, and you can use the best skills and resources you have to spread awareness on sex education. हमारे पास Right. startups हैं, हमारे पास doctors हैं, psychologists हैं, psychiatrists हैं, products हैं, services हैं, सब कुछ है sex education को लेके. So there was Right. no formal education any of us need. ठीक है? Right. So it gave me the space कि मैं as a parent, how can I help other parents to understand कि ये भी एक field है जो हम बात नहीं करते हैं. और वहां Right. से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑलमोस्ट 12 years बैक, जहां मैंने शुरुआत की ये टॉपिक के बारे में बात करना अपने ही बच्चों के स्कूल में, वो ही पेरेंट्स को लेके, फ्रेंड्स को लेके, फैमिली भाभीज एंड ननन्स सबको इकट्ठा कर करके आई वुड जस्ट टॉक अबाउट दिस टॉपिक. लेकिन आपको पता है ऐसा भी होता है, लेकिन आपको पता है ऐसा भी होता है. Right. वहां से आई थिंक, क्योंकि मैं एक माँ के रोल से बात कर रही थी, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ अ मदर, Yes. people could connect very easily. वहां से ये जर्नी शुरू होते होते फिर पता चला कि अगर वर्कशॉप्स लेनी है, अगर इसके बारे में बात करना है, तो थोड़ी स्किल्स होनी जरूरी है. ये Absolutely. बातों में तो जो होता है वो होता है. वहां से पता चला कि एक ऐसी पूरी इंडस्ट्री है जिसको हम ट्रेनर्स इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे स्किल्स डेवलप होती हैं, एक दूसरे कलीग्स हेल्प करते हैं, like you are great at networking. I have learned some amazing tips from you. So similarly मुझे पता था कि ये इंडस्ट्री मुझे हेल्प करेगी. फिर वहां जाके मैंने एक स्किल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. I just never stopped learning. Right. There in the 12 years, even today, I have 3 courses in my kitty right now, which I have to finish this month. So I am at least a little somewhere more updated than I was last month. तो ये choices लेके के किन से बात करनी है, कौन सा टॉपिक लेना है, उसके लिए मुझे स्किल्स की क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, मैं कहाँ जाऊं उसे ढूंढने, मेंटोर कौन है, बुक्स कौन सी है, कोर्सेज कौन है. तो ये छोटे छोटे चॉइसेस लेके बना के टुडे इज वेयर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग अबाउट माय जर्नी टू यू. वाओ. एंड जब आपने पहली बार स्टार्ट किया, लाइक यू मेंशन, आप बिल्कुल अपने बच्चों के स्कूल के पेरेंट्स के पास गए, या फॉर दैट मैटर बच्चों के पास ही गए, उनके फ्रेंड्स के पास गए और रिलेटिव्स के पास गए, तो कैसा था लोगों का रिएक्शन? आई मीन, वर दे रिसीविंग इट, वर दे लाइक कि क्यों बात कर रहे हो इस चीज पे? आपसे पूछना चाहूंगी मैं. नो, इट वाज ब्यूटीफुल इन फैक्ट, क्योंकि मैं ओपनली बोल देती थी कि मुझे ये टॉपिक के बारे में बात करना है, जिनको आना है आ जाए. I usually used to have a group of 20 plus mothers. तब तो mothers से शुरू हुआ था सब, and I would always have had an audience. Lovely. So it was very good to see कि जब open रख देती थी workshop, तो parents आ ही जाते थे. लेकिन trouble तब शुरू हुआ जब मैं schools जाने लगी, जब मैं schools offer करने लगी कि क्यों सिर्फ 20 बच्चों को ही ये मिले, क्यों ना बच्चों को हम सिखाएं कि अगर ये, तभी तो मैंने जो टॉपिक चूज किया था वाज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. लेकिन बच्चों को तो ये टर्म्स नहीं यूज कर सकते हैं, तभी के टर्म्स गुड टच बैड टच हुआ करते थे. तो मैं टॉपिक को लेके आई यूज्ड टू गो टू स्कूल्स एंड से कि मुझे आप एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, मुझे बच्चों से बात करनी है, मुझे ये सिखाना है, मुझे ये बताना है. इट वाज नॉट टू मच इन डेप्थ, क्योंकि बच्चों का तो अटेंशन स्पैन आपको पता है. पर इतना साइकोलॉजी उनसे बात करके कोई मतलब नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू टीच देम, अगर कुछ हुआ तो क्या करोगे आप, सही है या गलत है,
अब जाके किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे। तो मदर्स ओपन वर्कशॉप में आ ही जाते थे, सो देयर वाज अ ओके। पार्ट दिस पेरेंट्स दैट वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। एज अ स्कूल मुझे बहुत चैलेंजेस मिली कि स्कूल्स वुड नॉट अलाउ, या तो बोलते थे कि हम हमारे काउंसलर से करवा रहे हैं, या तो बोलते थे कि पेरेंट्स मानेंगे नहीं ऐसे टॉपिक्स की वर्कशॉप लेना, या तो कुछ राइट कुछ ना कुछ बहाने आ जाते थे कि स्कूल्स अलाउ नहीं करते थे। तो राइट इन बिटवीन एक ऐसा केस बन गया वन ऑफ द मुंबई स्कूल्स, जहाँ की स्टोरी बहुत ही बाहर आ गई, बहुत पेपर्स में उसको कवर किया गया। वो राइट एक स्कूल में इंसिडेंट हुआ था अबाउट सेक्सुअल अब्यूज। तो वहां से लेके और भी लोग पेरेंट्स बिकेम मोर अवेयर कि नो नो यस वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब राइट से लेकर फिर आज तक the schools have been extremely open. Now, obviously, it's not 100% schools that are open, but राइट उतनी तो मिल गई जो मैं हैंडल कर पाती हूँ। कभी श्योर कभी मना भी करना पड़ता है, कभी कभी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वी डोंट अग्री ऑन समटाइम्स। वो लोग ऐसे बोलते थे कि एब्स्टिनेंस के बारे में बात करो, मना कर दो, नहीं करना चाहिए। ऐसे मना करने से अगर बच्चे सुन लेते थे तो दुनिया कहाँ की कहाँ होती थी। तो कभी एग्जैक्टली कभी वैल्यूज के को लेके वो सब चैलेंजेस आने लगी, बट एज पेरेंट्स बहुत रिसेप्शन मुझे मिला, बहुत ही एक्सेप्टेंस मिला, and there is always a group of parents who want to do this workshop. I'm राइट। very grateful for that. सो हम आपसे बात कर रहे थे दैट एक आपके लाइफ का एक्सपीरियंस था, आपने सोचा कि मैं अपने बच्चों को पोस्टमार्टम ना बताऊं बट प्रिवेंटिव वे में बताना स्टार्ट करूं, जिससे उनको बेटर टूल्स मिले, बेटर इमोशनल स्ट्रेंथ मिले उस चीज को हैंडल करने की। Yes. सो ये तो बात हो गई, हम इस चीज पे काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लेडीज होती है जो जॉइंट फैमिलीज में रहती है और बहुत सारे चैलेंजेस जॉइंट फैमिलीज में आते हैं। बहुत सारी ऐसी मदर्स होती है जो जो बच्चे थोड़े स्लो लर्नर्स हैं उनको सिखाती है, एंड दे आल्सो थिंक कि मुझे भी बिजनेस उसके अराउंड बनाना है। तो एक तो हो गया कि किस निश में हमें काम करना है, और एक होता है बिजनेस के फॉर्म में उसको कैसे आगे लेके जाना है, और दोनों चीजें में बहुत डिफरेंस है। सो Yes. जब आप इसको एज अ प्रोफेशन सोच रहे थे कि मुझे इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है, तो आपने जैसे आप स्कूल्स के पास है, कुछ और कॉन्क्रीट स्टेप्स बता सकते हैं आप जो पीपल कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग? आई थिंक मेरे लिए बहुत ही टफ था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मेंटोर नहीं था जो ये कर रहे हैं और उनको ऑब्जर्व करके मैं आई कैन क्लाइंब माई लैडर क्विकर। तो यस मुझे बहुत कुछ समझने को टाइम लग गया कि इसमें क्या क्या जरूरी होगा। आई वुड वॉच वन एनएलपी कोच, आई वॉच सम अदर कोच, आई वॉच सम अदर कोच, बिजनेस कोचेस के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, वो क्या बोल रहे हैं, नेटवर्किंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कॉपीज लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ सुन सुन के मैंने बहुत सारे ट्रायल्स किए कि राइट कहाँ सक्सेस मिल रही है और कहाँ पे नहीं मिल रही है। तो आज भी राइट अगर देखोगे तो लिंक्डइन के ऊपर आई हैव ऑलमोस्ट 35,000 का फैमिली, इंस्टाग्राम पे 5,500 से कुछ बढ़ ही नहीं रहा है आगे। सो इट इज राइट कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपना स्किल और आप कहाँ कनेक्ट हो सकते हो। सो दैट राइट इज ऑल ट्रायल एंड एरर। मेरे यस पास ऐसा कोई नहीं था। सो फाइनली व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस इज टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है। राइट किसी ने नहीं किया ना, लेकिन आपको क्या करना है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं तो अभी तो सिखा रही हूँ, मुझे सिखाना है, लेकिन कहीं ना राइट कहीं मुझे पता चल गया कि सिखाने से बच्चों को तो सिर्फ मैं एक बार मिल रही थी, पेरेंट्स को तो सिर्फ एक बार मिल रही थी। फिर आगे क्या, आगे कौन है जो उनकी डाउट्स को क्लियर क्लियर कर रहा है, कहाँ से उनको कंटेंट मिलेगा। राइट ओके, तो एक बुक लिखते हैं। वैसे करके मैंने 2 बुक्स लिखी, जो राइट प्यूबर्टी के ऊपर है, एक गर्ल्स के लिए है, एक बॉयज के लिए है। तो एक और लैडर मुझे मिल गया कि ओके मैं ऑथर बन गई, मैंने पब्लिश्ड बुक्स, आई पब्लिश्ड बुक्स एंड एवरीथिंग। आप अपनी बुक्स का नाम बताएंगे सो दैट जो लोग देख रहे हैं दे कैन एक्चुअली बाय दैट फ्रॉम Amazon? मैं लिंक डाल दूंगी इसी पे। आप Surely. यस So I have it over here. So this is called When Boys Grow Up, राइट and this is called When Girls Grow Up. Please excuse लवली all my markers, but this is When Girls Grow Up. और जब मैं ये बुक लिख भी रही थी तो एक ड्रीम था कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं तो ये कैसी होनी चाहिए।
तो वो भी Right. सीख के I tried to make it as Wow. colorful and with illustrations and as much as I could. So Right. I think at every step मैं अपने आप को ये पूछती थी कि how can I make this better? What are the other things that I can do? तो पहले intention ऐसा ही था कि as a mother I want to talk to the mother. Then I Hmm. realized that this can become a career. This can become a business. I only have to Right. know what I need to do. फिर अपने Right. वर्कशॉप की प्राइसिंग कैसे करनी है, कैसे एडवर्टाइजमेंट्स देनी है, फेसबुक को कैसे यूज करना है। तब तो फेसबुक एड्स और 12 years back it was not so easy Yes. and so relatable that हम अपने आप कर सकते थे। तो Right. कहाँ कहाँ एडवर्टाइज करना चाहिए, व्हाट्सएप तभी आया नहीं था। आई थिंक इट वाज ओनली लेटर ऑन आई गॉट व्हाट्सएप ऑन माय phone. So it was very difficult कि word of mouth को, you know, like how pamphlets छपाए हैं मैंने, अच्छा. so all of that कि ये हो रहा है, कोई है जिसको बात करनी है, do you want to listen to you know what I have to share. So Right. business wise I think every step I had something new that I could add on, and Sure. since not many people were there in this line of work, it was Mm-hmm. easy for me to explore many different platforms. Right. Right. वर्कशॉप भी किया, बुक्स भी लिखी, प्रोडक्ट्स के साथ भी आई हैव टाइड अप, आई कोलैबोरेटेड, Mm-hmm. so there were services, there were products, and we are looking into combining both and then creating the business. Lovely. ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी किए, काउंसलिंग भी करती थी, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड that can be tried from product and service point of view, and now I'm in a space where I know okay मुझे ये करना है, पहले ये करना है फिर ये करना है. So then I understood how important it was to have a goal, to have Yes. dreams, and then to plan and strategize to reach there. So Sure. all this I have kind of learned that yes, there can be a career in sex education. मुझे जब मैं सीख रही थी मुझे बोला गया था कि नियति ये लाइन ऐसी है जहाँ तू पैसे कमा नहीं पाएगी. And Right. I'm very proud to say that that's untrue. I have earned my money, and I'm sure that anybody can. एंड आई थिंक दिस वर्क गिव्स यू सो मच अ पर्पस, यू नो, जब आप ये Yes. इस चीज से पैसा कमाते हो, वर्ल्ड में आपको कोई कुछ और भी दे दे, आप बोलोगे नहीं वो आप अपने पास रखो, मुझे तो इस चीज में मजा आ रहा है, मैं तो इसी से पैसा कमाऊंगी और इसी से यू नो लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आऊंगी. Yeah. So जब मैं इनिशियल इयर्स में व्हेन आई वुड गो फॉर नेटवर्किंग मीट्स और मैं इंट्रोड्यूस करती थी अपने आप को, I got a lot of feedback to say, Niyati, don't call yourself sex educator, sexuality educator, parenting coach बोल या तो adolescent coach बोल या तो कुछ और, लेकिन अपने कंट्री में ये वर्ड्स नहीं चलेंगे. I said राइट. यही तो बात है कि यही चलाना है, तो मैं कैसे अपना टाइटल चेंज करूं. So I यस. have to walk the talk, right? So if I am एब्सोल्युटली. saying I want to talk about sex and sexuality, but I'm not ready to use the words, then where's my integrity? So that is एब्सोल्युटली. something that I also learned along the way. Challenges क्या हैं, लोग का perception कैसा है, and it's been a great journey. आई लव द वे यू नो यू एक्सपेरिमेंटेड सो मेनी थिंग्स. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गलतियां नहीं करेंगे, बट आई थिंक वो गलतियां ही हमें बताती है कि हमें क्या नहीं करना है अपने बिजनेस में और किस तरह से आगे बढ़ना है. Absolutely. सो नियति, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैंने तो एक बार यू नो बच्चों को बता दिया, आई हैव टोल्ड पेरेंट्स वंस, बट देन हाउ डू आई रियली एंश्योर दैट दैट चेन कंटिन्यूज, because सिर्फ अकेले नियति यू नो cannot really have that flag in India and say that I am going to bring that kind of a change. So मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि how important it is you know to have more people you know associating with you, whether it's your team, whether it's partners, whether it's other stakeholders, you know. And अभी आप Yeah. अपने काम के next level पे चले गए हो जहाँ पे आप बच्चों को ही नहीं सिखाते, but you are also helping in creating more you know sexuality educators. तो आप थोड़ा अपनी उस जर्नी के बारे में बताएं. सो मैंने नियति से अभी यही पूछा कि यू नो कितना इम्पोर्टेंट है कि एक टीम का साथ होना, और किस तरह से, क्योंकि कई बार हम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ते हैं. हम सोचते हैं कि यू नो हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, बट जब हम चीजें अकेले करते हैं तो थकने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं. सो नियति, Yeah. आपकी जर्नी जानना चाहूंगी मैं. So, Nirupama, it is very important. No one person, yes, there can be a start by one Yes. person.
And definitely I'm not that person who has started. Dr. Vatsa 45 years पहले उनकी टीम के साथ ये already शुरुआत कर चुके हैं. So this is Okay. not it's not a 12-year-old topic that somebody has started. वो Right. एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझसे बोला है, मैंने आगे टॉर्च को बढ़ाया है. So that Right. way, sex education has started almost 45 years back. When Mm-hmm. Dr. Vatta, Dr. Raj Brahmbhatt, all of them have continued doing what they're doing. But for Mm-hmm. me, what was important was आप डॉक्टर्स के हिसाब से आप बात करते थे. मुझे एडुकेटर्स चाहिए जो एक काउंसलिंग का, एक कोचिंग का अप्रोच लेके लोगों Right. की हेल्प करे पर्सनली एंड इन ग्रुप्स. So Right. that's where, after almost 10 years of experience, understanding all the different failures I've had and the successes and the Yes. trials and whatever I have learned from different mentors, I said, okay, I want a bigger team. Mm-hmm. Only if that team aligns with my vision and Mm-hmm. understands के मेरी स्टाइल क्या है. मुझे नॉन जजमेंटल people who understand language, जो बच्चों के साथ काम कर चुके हैं या तो adults के साथ. तो I wanted that passionate people. तो I Right. said, okay, the only way for me to do this is to open up the platform and say, और कौन कर रहा है? Let's come and Right. collaborate. Then there were a lot of people who said, नियति आपसे सीखना है. आप ये Right. कैसे करती हैं? Sex education, I understand what child sexual abuse is. लेकिन जब Right. कोई बच्चा मुझे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब कैसे दूं? तो तब Right. मुझे समझने लगा कि इंफॉर्मेशन तो बुक्स से, गूगल से, कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है. Right. स्किल कहाँ से लेके आए हैं? Skill was something that people were really lost about, especially Hmm. when it came to जवाब कैसे दे, ये टॉपिक पे Yes. बात कैसे करें, कब करें, Uncomfortable हो कहाँ जाते हैं करें. लोग. Yes. बहुत ही. एंड इट देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. आज भी मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बच्चों से बात कब करें, कैसे Right. करें. So that's Right. where I realized that maybe there is some space where I can teach from my experience. This is how I do it. कैसे कर Mm-hmm. सकते हैं, ये proved methods हैं कि Mm. कैसे. So that is where I came up with the trainers program. It's called the Right. Sex Educators Training Program, जहाँ पे Lovely. it is a now I've come online. Earlier batches offline हुआ करते थे, wherein it's a month-long program जहाँ पे Mm-hmm. खुद का mindset, खुद की skills, खुद की लाइफ में बदलाव, and then to be that powerful educator who can Right. speak to sex and sexuality without hesitation, with lot of compassion, and with the skills that needs, so that it becomes easy for the other Right. client and the parents and the children to understand that. So Sure. that is where the program came in place, and now I have about 15 students who I have trained, and Wow. I was very happy with the way their lives are changing, their mindset is changing, their acceptance level is changing, the courage is changing, they're becoming outrageous the way I want them to be. And Lovely. I'm super proud of the way they are accepting the whole thing. And very soon, we are coming up with a bigger plan wherein it will not only be me, there'll be a Mm-hmm. big army of educators who will take this upon themselves and say, आज के बच्चे, आज के अडल्ट्स इंटरनेट फिंगर टिप्स पे हैं, रिलेशनशिप्स के मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं, तो और लोग होंगे who can help them out in Of times of course. crisis or teach them to prevent it, both ways. So Lovely. yeah, And I'm able to imagine that army, that strong army with tools and armors and absolutely. everything. Lovely. Fantastic. मुझे ये भी एक समझ आती है कि जब हम किसी और को बैरियर से निकालने की कोशिश करते हैं, हमारे खुद के बहुत सारे बैरियर्स टूटते हैं. बिकॉज वही चीज होती है ना कि हम सामने वाले में वही देखते हैं जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे था, जो हमने ओवरकम किया है. सो आप क्या लोगों को भी, आपने जैसे बोला कि पहले वो खुद पे काम करते हैं एंड देन दे स्टार्ट एम्पावरिंग अदर्स, तो वो Yes. खुद पे काम करना कितना जरूरी होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी. That is the first thing I look into. कि राइट. आप कहाँ हो अभी लाइफ में, यहाँ से आपको कहाँ जाना है. अगर आपको ये एडुकेटर बनना है तो आपको इतना तो होना चाहिए. You cannot राइट. doubt your sexuality. You have to be thorough with what you are. You have to यस. know what does this mean. You have to open your gates. अगर हम राइट. sexuality की तरफ अगर acceptance नहीं बनाएंगे, या तो
एक खुला दरवाजा नहीं देंगे कि यू नो व्हाट, Right. आई एम नॉट जजिंग यू. Right. If अगर मेरा क्लाइंट आके मुझे कहता है कि आई हैव दीज एडिक्शंस और I think I am maybe a bisexual, but I don't know what to do. I don't know how to tell my parents or my wife or whoever. अगर Right. मैं judge करने लगी कि ऐसे कैसे, how can you be bi, you are married, तो I will not be able to help. तो Of जब course. तक मैं एक calm, settled, relaxed, Non-judgmental. accepted, compassionate वो स्पेस में नहीं हूं तो मैं कैसे किसी की Right. हेल्प कर सकती हूँ. सो फॉर Right. मी, फॉर माई एजुकेटर्स, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप पहले वो जजमेंट की कुर्सी छोड़ें, आप Right. नॉन जजमेंटल कुर्सी पकड़े, या तो जस्ट बिकम दिस पर्सन कि आपके सामने कोई खड़ा है ना, आपको सिर्फ प्यार निकले, आपके आपकी एनर्जी से है ना, सिर्फ प्यार निकले वो लोगों के लिए. Okay, I am Right. here, you know, just tell me, I am here to listen to you. So I think Right. working on yourself is the first step anybody should take for whatever career they are taking up. Definitely. Lovely. लवली. सो नियति, आप और भी लीडर्स क्रिएट कर रहे हो, कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि मेरे कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे ये लोग सारे. आई मीन यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वही होता है ना कि समटाइम्स वी हैव दैट थिंग इन आवर माइंड कि मैं तो अपने जैसे और लोग खड़े कर रही हूँ, तो ये कहीं मेरे कंपटीशन में ही ना आ जाए. सो Yeah. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं. आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज पे? So I have three things in my mind about you know, my students. I will call them my students right now. यस. जब मैं डॉक्टर वत्सा के पास गई थी, the only thing he has taught me is to give. राइट. Alright, so वो एक आ गया है मुझ में कि जिसको जो चाहिए, I am here to give. So that is one. राइट. Secondly, अगर मुझसे कोई बेहतर है, then they deserve to be that. लवली. If I can learn something back from my student, why not? या, ऑफ कोर्स. All right. So student is, for me, yes, there is something I have given them. But if I will go into a space of arrogance or say that there cannot be anybody like me or better like me, or how did they become successful and not me, I think I will go inside to see where have I not been able to be who they are. मेरे में Yes. कौन से ब्लॉकेजेस है, मुझ में कौन से फियर्स हैं. अगर कोई बन सकता है तो मैं भी बन सकती हूँ. Of So course. that will become my guiding light rather than Right. feeling jealous about it. So, and another reason also what I thought is, अकेले हम कितने लोग तक पहुंच पाएंगे निरुपमा. अगर मैं Right. मुंबई में बैठी हूँ, यस अब ऑनलाइन है, लेकिन क्या हर इंसान ये जो दुनिया भर लगे ग्लोबली, everybody doesn't know Niyatii. There's a very small percent who knows. Right. Absolutely. So the way Niyati had presented it in such a beautiful way that it's all about giving. और अगर आप अपने स्टूडेंट से कुछ सीख सकते हो, if there is somebody whom you have trained, whom you have empowered, if you can learn even a little bit, why not learn it? And finally, as Niyati mentions, that the world requires more leaders, more people, you know, who can actually give that in their own color, in their own flavor, in their own language. Niyati cannot reach out to everyone. So I yeah. think there is a bigger picture here. It is more about people deserve to know this. People need help in this area. तो अगर Yes. ज़्यादा लोग होंगे तो हम you know, we'll reach out to that many people. And I'm Right. telling you, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ एक saturation आ गया है. अगर बैंड्रा में रेस्टोरेंट्स इतनी हो सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है, दुकान इतनी हो सकती है और सक्सेसफुल हो सकती है, तो ये तो बहुत ही छोटा niche hai, where we don't have enough people. Of So course. I think I'm only serving my nation and I'm serving my globe, where I'm saying that, okay, if I have something, please take it and reach out to more people. That's the only intention here. Lovely. And it's actually spreading your magic and I think rubbing your magic to more people so that वो अपना magic add करके और बड़ा कर सके उस चीज. I hope so. I so hope so. Lovely. So it was such a pleasure talking to you, Niyati. I mean, thank you so much for your time. But before you leave, we would want some nuggets of gold in the form of a powerful message from you. What is that final message that you would want to give to the audience who are listening to this or who might be listening to the recording of this part? We would want to know from you.
I think going from what we were here for and discussing the journey from being somebody to becoming another person altogether, my only message is don't stop. Be Yeah, consistent. Everything will come in the way. Failures, successes, experiments, triumphs, awards, ditches, sub aega. The only thing that will take you from here to here is your choice and decision to continue each and every day. मैं बहुत रातें रोई हूँ. रात को मैं हस्बैंड को फोन करके बोलूंगी कि बस हो गया, मुझे नहीं करना है, कितनी डिफिकल्टीज है, कोई समझ नहीं रहा है, बहुत कुछ बहुत रातें ऐसी निकाली है. लेकिन सुबह आई वुड फाइंड माई सेल्फ बैक ऑन माई लैपटॉप, बैक मेकिंग माई कॉल्स के कब आना है वर्कशॉप, कैसे करना है. सो हैव दोज मोमेंट्स, इट्स ओके, बट स्प्रिंग बैक टू से कि आज क्या करूं, व्हाट हाउ डिफरेंस, what different can I do today. So of please course. continue, keep your consistency, and experience the flavors of whatever comes in between. You are going to love yourself for allowing yourself to experience all of this. Yes, and that those flavors actually add that spice and taste to the recipe that you are creating for the world. Absolutely, absolutely. Lovely, fantastic, Niyati. I really enjoyed talking to you, and I can probably keep on talking to you for the next 1 hour. I am enjoying it so much. But then we want to respect your time. Thank you so much for coming here. Thank you for enlightening us with such an important subject, sexuality, and we are so proud to have a sexuality educator, in our country, and creating more sexuality educators. Hats off to you. Thank you Really love so your much. spirit. Thank you. I really appreciate the question, the line of questions for me today, Nirupama. The only reason being, I'm mostly the interviews are about what is sex education, who needs to do it, what needs to do it. It was very important for people to know what goes behind the doors, what Yes. happens behind, and it's very important to see somebody's really trying very hard because it's important, not because it's a very trending topic. I'm not an influencer. I am not here to give you the entertainment part of it, but I'm definitely here because there's a message I want to spread. I want to be useful to you. So please reach out if there is anything I can help you with. And thank Yes. you, Nirupama, for giving me this platform to speak about my journey. Absolutely. So, Niyati, there are people who are listening to you on YouTube and on LinkedIn. If they have to reach out to you, how do they really communicate? If you can just let them know. Just put in the name Niyatii with double I, which is Niyati, N again, and SHAH. You'll find me on all platforms. Lovely, lovely. Niyati So and for Niyati and Shah, I mean the sexuality educator. So guys, if you have anything to do with sexuality, if your organizations require that, please make sure she is the right person to connect with. thank you so much, Nirupama. Thank you. All the best, Niyati. Please take care. Yeah. Bye. All righty. Yes, everyone, I am logging out.